Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for grade 11, and today I am going to complete the remaining portion of Phylum Porifera. So let's move to the classboard. So dear students, Phylum Porifera. And in the previous lecture, we have discussed the basic organization of their body, that the outer layer is made up of cells which are called pinacocytes, and that is why the outer layer is called spinacoderm, while the inner layer is made up of choanocytes. So that is why it is called as choanoderm, and in between there is a jelly-like mesenchyme, and it consists of spicules and also the amoeboid cells. Now, dear students, let's talk about their openings or the pores. So there are two major pores. In the previous lecture, I have told you and also discussed with you. So this is a typical structure. So this is the large pore. ये बड़ा सा सुराखा जो ये ऊपर की तरफ इसे कहते हैं, and that is called as osculum. And these small pores, they are called as ostia. And ostium is for singular, clear? Or ostia, they are incurrent pores, while the osculum, they are excurrent pores. और प्रीवियसली मैंने आपसे डिस्कस किया था कि वाटर एंटर होगा इन ऑस्टिया से और यहाँ से फिर ऑस्कुलम के जरिए बाहर को मूव करेगा, क्लियर? सो दैट इज हाउ द वाटर मूव्स. सो देयर आर टू मेजर पोर्स, two types of pores. The osculum, the large single pore, the large single pore through which water moves out. So that is why it is called excurrent. X means outside. And the second pore, so there are many in number, the ostia. That is the plural of ostium, clear? So the small pores through which water moves in, through which water moves in. So that is why it is called incurrent pores, clear? They are called as incurrent pores. अब dear students, आपको बताया था कि इनके अंदर जो दो लेयर्स हैं, आउटर लेयर एंड इनर लेयर. तो बाहर वाले लेयर के जो सेल्स हैं, they are called as pinacocytes, or in between there are spicules of various shapes, ऐसे spikes हैं, okay? और they also have amoebocytes, and the internal layer, that is choanocytes. And the choanocytes have
collar cells, having a single flagellum. So that is why the choanocytes are called as flagellated cells. And here is a porocyte, जो कि क्या बनाएगा, ostium, ठीक है. So this is porocyte. तो यहाँ से इतने हिस्से की आपको डिटेल दिखाई दोबारा से. प्रीवियस लेक्चर में मैंने ड्रॉ भी किया था इसको. So this is porocyte. Flagellated cell, which is called choanocyte. Clear? और इसी वजह से इस लेयर को क्या कहते हैं? Layer called choanoderm. The inner layer. और ये अंदर की तरफ मौजूद है, ठीक है. And these are pinacocytes. The layer is called pinacoderm. And this layer is the mesenchyme. और इसके अंदर ये मौजूद हैं spicules and amoebocyte or amoeboid cell, and this is porocyte. Clear? जो क्या बना रहे हैं? ये वाले structures, ostia. Okay. So this is, again, I have drawn the structure. Now, if we talk about their food, जहाँ तक इनके फूड की खुराक की बात है, if we talk about their food, तो फूड को भी हम दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. One food is the plankton. Plankton basically microscopic floating organisms को कहा जाता है. Clear? That is the term for the plankton. और plankton जो है ये फर्दर आके दो तरह के हैं इसमें. Zooplankton these are the drifting or floating animals, microscopic animals, while the phytoplankton the drifting plants or the small microscopic plants. तो जो plankton है dear students याद रखिएगा ये 20% खुराक इसकी plankton है. 20% of food is the zooplankton and the phytoplankton. और remaining जो 80% है that is organic matter. That is organic matter. 80% the dead organic matter. और ये food यहाँ पर the food enters through ostia इन और स्मॉल पोर्स के ज़रिए, चूँकि वाटर के अंदर से ये होता हुआ आएगा, बिकॉज दे आर सेसाइल. याद रखिएगा दे आर सेसाइल. सेसाइल
और इसका मतलब होता है फिक्स्ड, ठीक है। ऑल ऑफ देम दे आर सेसाइल। और इसका ऑपोजिट होता है मोटाइल। मोटाइल का मतलब जो मूव कर सकते हो, क्लियर, हरकत कर सकते हो, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हो। तो ये वाले ऐसे एनिमल्स हैं जो कि एक जगह पे फिक्स होते हैं। दे आर फिक्स्ड टू रॉक्स और सम अदर structures. Okay. And so water enters through the ostia by the action of flagellated cells. जो फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं वो जैसे जैसे इस तरह से मूव करते हैं तो ये अंदर की तरफ ऐसा प्रेशर जनरेट करते हैं कि वाटर अंदर की तरफ मूव करके आएगा। क्लियर, द वाटर विल मूव इनसाइड इन फ्लैजिला की मदद से। द फ्लैजिलेटेड सेल्स, इनको क्वाइनोसाइट्स कहते हैं। And it is ingested, the food is ingested by the flagellated cells. इन्हीं flagellated cells जो अंदर की तरफ मौजूद हैं, ठीक है, ये जो फूड है इसको ये इंजेस्ट करेंगे। और flagellated cells कौन से हैं? Choanocytes. Clear? And the waste is passed directly, या तो वो डायरेक्टली जो है वो बॉडी वॉल के जरिए डिफ्यूज करके बाहर को निकल जाएगा, ठीक है। पास डायरेक्टली फ्रॉम बॉडी वॉल बाय डिफ्यूजन और थ्रू द ऑस्क्यूलम, या फिर ऑस्क्यूलम के जरिए उसको बाहर निकाल दिया जाएगा। क्लियर। सो यहाँ से होता है वो मीजनकाइम से पिनाकोडर्म से बाहर डिफ्यूज हो जाएगा जो वेस्ट है इसका। तो ये तो इसकी बात थी फूड के एतबार से। और इफ यू टॉक अबाउट द स्केलेटन, क्योंकि एनिमल है तो दे हैव गॉट स्केलेटन। सो स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, द स्केलेटन is made up of various shaped spicules एक वर्ड होता है स्पाइक कहते हैं कांटे को, और स्पाइक्यूल छोटे छोटे कांटों को आ जाता है, कांटे नुमा शक्ल। ये देखें, ये छोटे छोटे स्पाइक्स हैं, ठीक है, इनको स्पाइक्यूल्स कहते हैं। which may be calcareous, means made up of calcium। calcareous का मतलब made up of calcium carbonate और silicious। silicious का मतलब made up of silica, that is SiO2, या तो उससे बने होंगे। क्लियर। So that is their skeleton and it is present among the, which is present among pinacocytes and ostia, क्योंकि वहाँ पर ज़्यादा सपोर्ट की ज़रूरत होती है, तो वहीं पर ये मौजूद हैं ओस्टिया और पिनाकोसाइट्स के दरमियान में। ये देख सकते हैं यहाँ पर इस साइड पे मौजूद होते हैं। सो दैट इज़ अबाउट देयर स्केलेटन। नाउ डियर स्टूडेंट्स, अबाउट देयर
reproductive system and nervous system. So first of all, if you talk about the nervous system, so no specialized, there is no specialized nervous system and while sensory neuron net may be present to coordinate water movements. पानी की मूवमेंट्स को कोऑर्डिनेट करने के लिए वो किस डायरेक्शन में और फूड जो है वो किस डायरेक्शन से आएगा, सो उसके एतबार से डिफ्यूज सा एक नेटवर्क न्यूरॉन नेट होता है इसके पास, सेंसरी न्यूरॉन, जो कि सेंस करने के बाद फिर जो फ्लैजिला की मूवमेंट करवाएगा और इस तरह से फिर वो अपने फूड को जो है अंदर लेकर के आएंगे. एंड द स्केलेटन इज मेड अप ऑफ, ये MCQ है, इसको मार्क कर लीजिए, स्पॉन्जिन फाइबर्स. Now, dear students, their reproduction. So they have both sexual and asexual reproduction. दोनों ही जो है वो मौजूद हैं. First of all, the asexual reproduction. Then the sexual reproduction. So जहाँ तक बात है asexual reproduction की, so mostly इनमें जो the basic the sponges reproduce asexually by forming buds. और बर्ड्स किसे कहते हैं स्टूडेंट? आउट ग्रोथ होती है, ठीक है, दैट इज बर्ड मीन्स एन आउट ग्रोथ. अब जो बर्ड्स हैं इनके अंदर, और इस प्रोसेस को बर्ड फॉर्मेशन को क्या कहते हैं? द प्रोसेस is called budding. दो तरह की बर्ड्स बनती हैं इनके अंदर, एक इंटरनल और एक एक्सटर्नल. एक एक्सटर्नल बर्ड और दूसरा इंटरनल बर्ड्स. ये दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं. लाइक दिस इज अ स्पॉन्ज, तो यहाँ से ये बर्ड बनना शुरू होगी बाहर की तरफ, तो ये एक्सटर्नल बर्ड कहलाएगी, ठीक है. दिस इज एक्सटर्नल बर्ड.
और अगर ऐसा हो कि बर्ड अंदर की तरफ बने, if the bird is formed internally, so this is called as, इसको एक खास किस्म, चूंकि ये एक्सेप्शनल केस है, सो इंटरनल बर्ड्स को याद रखिए कहा जाता है गैम्यूल्स। द इंटरनल बर्ड्स, internal birds are called gammules. Short question के लिए मार्क कर लें इसको, what are gammules? So the internal birds formed in the sponges are called gammules. Clear? अब आते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन याद रखेंगे मोस्टली most sponges are hermaphrodite, hermaphrodite या जिसको बायसेक्सुअल भी कह सकते हैं, ठीक है। hermaphrodite means having male and female gonads, having male and female gonads। एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर दोनों गोनेड्स यानी टेस्टिस और ओवरीज, जैसे कि अगर हम बात करें एनिमल्स में, तो अगर एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर मौजूद है तो उसे हर्माफ्रोडाइट कहते हैं। क्लियर? लेकिन यहाँ पर भी दो सिचुएशंस हैं, और वो दो सिचुएशंस क्या हैं? क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है तो यहाँ पर दो तरह की कंडीशंस बनेगी। एक है प्रोटेंडरस और दूसरी है प्रोटोगाइनस। क्लियर? अगर तो मेल सेक्स सेल्स पहले बने, इफ मेल सेक्स सेल्स, जिनको हम कहते हैं स्पर्म्स, आर फॉर्म्ड फर्स्ट, अगर वो पहले बने, एंड ओवा later, this is called proto-anti and animal protandrous। यानी इस कंडीशन को कहेंगे प्रोटोएंटी और उस एनिमल को कहेंगे प्रोटैंडरस। क्लियर? अगर यानी क्योंकि हर्माफ्रोडाइट है, मेल गोनेड्स भी हैं, फीमेल गोनेड्स भी हैं, अगर मेल सेक्स सेल्स पहले बन जाएं, फीमेल सेक्स सेल्स यानी ओवा बाद में बने लेटर ऑन, सो ऐसी कंडीशन को प्रोटैंडी कहते हैं, और उस ऑर्गेनिज्म को या उस स्पॉन्ज को प्रोटैंडरस कहेंगे। और इसके अपोजिट, इफ फीमेल sex cells means ova are formed first, अगर वो पहले बने, and sperms later, this is called protogyny, and organism or the animal protogynous। क्लियर? उसे प्रोटोगाइनस और इस कंडीशन को प्रोटोगाइनी कहेंगे। लेकिन यहां पर भी एक ऑप्शन, एक इंपॉर्टेंट बात, मोस्ट
sponges are protandrous. ज़्यादातर स्पॉन्जेस जो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस कर रही हैं वो प्रोटेंडरस होती हैं. क्लियर? और एक और चीज दैट द फर्टिलाइजेशन जिसको सिनगैमी भी कहते हैं. सिनगैमी, गैमी मतलब गैमीट्स, सिन मीन्स फ्यूजन, सो फ्यूजन ऑफ गैमीट्स इज कॉल्ड सिनगैमी या फिर फर्टिलाइजेशन occurs in the mesenchyme. Important MCQ. Mesenchyme जो jelly like layer थी, and sperms are carried by amoeboid cells जो यहाँ पर मौजूद थे mesenchyme के अंदर, amoeboid cells. क्लियर? और याद रखना है इनके अंदर के जब वहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी, इट रिजल्ट्स इन zygote formation, blastula, and larva are released in water. ठीक है? और which forms the new sponge, जिससे new sponge बन जाएगी. Now there are examples. So number one, cycone. So this is given in our book. Cycone, that is a marine sponge, and it is typical. Typical का मतलब आम तौर पर जो स्पॉन्जेस हैं वो साइकोन की तरह की ही होती हैं. हमने इसकी डायग्राम ड्रॉ भी की थी in the previous lecture. So like this, इसका स्ट्रक्चर होता है. ठीक है? This is cycone. That's a typical marine sponge. Number two, leucoselenia. It is made up of erect tubes. Erect tubes, बिल्कुल ऐसे सीधी खड़ी होंगी इस तरह से. बहुत सारी whitish यूजुअली इन कलर होती हैं, बहुत सारी ट्यूब्स. So this is leucoselenia. Number three is spongilla. That is a freshwater sponge. Clear? And number four is Euplactella. और याद रखिएगा ये इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है. Euplactella, it is delicate, नरम होती है, and made up of glassy framework. Also called, ये एमसीक्यू के लिए इसको भी मार्क कर लें. It is also called Venus flower basket. बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन, खूबसूरत सा, इस तरह से होती है ये. Like this. Clear?
So like a flower basket, Venus flower basket. So these are the examples, a few examples of the sponges. Now, dear students, the importance of sponges or the poriferans, and that is of much interest. So, first of all, the first importance is regarding the loofahs. Loofahs, or sometimes they are also called as loofahs. Clear? Loofahs. So, the natural sponges are used since a long time ago, for bathing, and washing. आप सोच रहे होंगे किस तरह से. सो अक्सर ये वॉशरूम्स की जीनत है. ये आमतौर पर ये स्पॉन्ज टाइप छोटा सा पत्थर की तरह का होता है, जिसमें छोटे छोटे स्पॉट्स होते हैं इस तरह से. ठीक है, एक इरेगुलर शेप सा. सो इनको लूफास कहा जाता है या लूफस भी कहते हैं. और स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए और आमतौर पर वहाँ से जो जर्म्स और उसको मट्टी को उतारने के लिए फीमेल्स आमतौर पर इसको इसको यूज़ करती हैं. और हमारी देसी लैंग्वेज में यानी पंजाबी में इसको चावा में भी कहते हैं. ठीक है. सो ये बेसिकली वही चीज़ है. जो नेचुरल जो स्पॉन्जेस हैं वो बेसिकली आज भी इनकी डिमांड है. हालांकि अब तो सिंथेटिक आ चुकी हैं स्पॉन्जेस, लेकिन इनको लूफास कहा जाता है बेसिकली. क्लियर. और ये स्क्रब करने के लिए, स्किन को स्क्रब करने के लिए इस्तेमाल होती हैं. सो ये तो एक इनकी इम्पोर्टेंस है टू इंक्रीज द ब्यूटी और स्किन को एक्सफोलिएट करने के लिए. उस वहाँ से मट्टी को और इस तरह की जो उनसे स्टेनिंग होती है उसको रिमूव करने के लिए यूजुअली द फीमेल्स यूज दैम, क्योंकि उन्हीं के पास इतना टाइम होता है. नाउ द सेकेंड इम्पोर्टेंस that is very much important, or that is surgical gauze. The sponges are used in surgical operations to absorb blood and fluids. तो चूंकि स्पॉन्ज के अंदर अल्लाह ताला ने एक खासियत रखी है कि ये फ्लूइड्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है. तो सर्जरी के अंदर जो है इनको इस्तेमाल किया जाता है बाय द नेम ऑफ गाज. सर्जिकल गाज कहते हैं. देखा होगा आपने वाइट कलर की जो पट्टी होती है. ठीक है. इस तरह से मैश सा बना होता है उसके ऊपर, इस तरह से बिल्कुल वाइट कलर की वो बैंडेज टाइप जो होती है, जिसको हम आमतौर पर हमें चोट लगे तो उसको बांधते हैं वाइट कलर की. तो एक ख़ास किस्म की होती है जो नेचुरल एक्चुअली आती है. सो दिस इज़ गाज. इसको गाज बोलते हैं. वाइट कलर की होती है सर्जरी में, क्योंकि जैसे सर्जरी में कट तो लगना है. कट लगेगा तो माइक्रोस्कोपिक वेसल्स यानी कि कैपिलरीज भी कटेंगी, तो ब्लड भी निकलेगा और जो दूसरे फ्लूइड्स हैं वो भी ऊज आउट होंगे. तो उनको साफ़ करने के लिए उनको, क्योंकि ये एब्जॉर्ब कर लेती है,
सो द सर्जिकल गाज इज यूज विच इज़ बेसिकली स्पॉन्ज, ठीक है। तो ये सिंथेटिक भी आजकल तो मिलती हैं, वैसे तो नेचुरल जो होती हैं उनका अपना एक फ़ायदा है, ठीक है। सो दे सर्जरी से इस तरह से इस्तेमाल हो रही है। इसी तरह से अनदर इम्पॉर्टेंट यूज इज दे आर यूज्ड इन द buildings. Buildings और वहाँ पर as sound absorber. डियर स्टूडेंट्स, आपने पढ़ा होगा फिजिक्स में या साइंस की किताबों में कि जो साउंड वेव्स होती हैं वो सॉफ्ट सरफेस में एब्जॉर्ब हो जाती हैं और हार्ड सरफेसेस जो होती हैं वहाँ से रिफ्लेक्ट होती हैं। इसी वजह से जो ऑडिटोरियम्स होते हैं, आपके कॉलेज का ऑडिटोरियम होगा या जो बड़े बड़े हॉल्स होते हैं जैसे लाइक सिनेमा हॉल्स या फिर जहाँ पर मीटिंग्स होती हैं और जहाँ पर साउंड प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर क्या होता है कि अंदर वाली साइड पे दीवारों पे आप अपने ऑडिटोरियम में जाके देखिएगा, उसकी जो उनकी इंटरनल जो वॉल्स हैं, यानी कि उनकी वॉल्स के ऊपर बाकायदा तौर पर सॉफ्ट कलर की सॉफ्ट किस्म की कारपेट और स्पॉन्ज टाइप कारपेट जो होती है वो इस्तेमाल होती है। सो इनका मकसद क्या होता है, जब साउंड वेव्स इनको टकराती हैं तो वो एब्जॉर्ब हो जाती हैं जिससे बाहर शोर नहीं जाता। तो जहाँ पर भी क्वाइट प्लेसेस चाहिए और वहाँ पर मतलब कि साउंड जो है कमरे से आवाज़ बाहर ना जाए या फिर वो ऑडिटोरियम से आवाज़ बाहर ना जाए, वहाँ पर स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है, इन स्पॉन्जेस को इस्तेमाल किया जाता है जो सिंथेटिक भी हो सकती हैं और वो नेचुरल भी हो सकती हैं। सो एज साउंड एब्जॉर्बर्स। In the buildings, auditoriums, cinema halls, और ख़ास तौर पर डियर स्टूडेंट्स याद रखिएगा जो ऐसे इलाके जो जिसे कहते हैं कि वो एयरपोर्ट के करीब होते हैं, ऐसे इलाके जो एयरपोर्ट के करीब होते हैं वहाँ पर ख़ास तौर पर इनको लगाया जाता है, ठीक है। उनके घरों वाले या उनके पास जो आसपास दफ्तर या बिल्डिंग्स होती हैं, ऑफिसेस होते हैं, वो इसको ज़रूर इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ड्यू टू दिस स्पॉन्जेस, क्योंकि जहाँ एयरपोर्ट के करीब जहाज़ का जो शोर है वो बहुत ज़्यादा, जब भी वो टेक ऑफ करता है या वो फिर लैंड करता है, तो देयर इज़ अ ह्यूज साउंड, बहुत ज़्यादा साउंड होती है। और एयरपोर्ट पे हर आधे घंटे बाद, 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद जब वो प्लेन ने आकर लैंड करना है, तो जो वहाँ के मुस्तकिल रिहायशी होते हैं या फिर वो जो काम काज के लिए आते हैं, उनकी सहूलत के लिए, ताकि जो नॉइज़ पोल्यूशन है उससे बचा जा सके और उनके जो उनसे क़ुव्वत सुमात है वो बुरे तरीके से मुतासर ना हो, तो वहाँ पर स्पेशली इन स्पॉन्जेस को इस्तेमाल किया जाता है, बिल्डिंग्स के अंदर वाले साइड पे लगाया जाता है ताकि ये साउंड को एब्जॉर्ब कर सकें। और जो एयरपोर्ट के करीब वाली जगह हैं उनके बाहर लगाया जाता है ताकि वो बाहर से उनकी साउंड्स को एब्जॉर्ब कर सकें और अंदर उनके लिए सुकून हो। सिनेमा हॉल्स एंड अराउंड airports to absorb sound waves. Okay. Another use is this there. And number 4, they are found, the commercial sponges हैं, commercial sponges are found in the warm water of Mediterranean Sea। तो जो जितने भी कमर्शियल स्पॉन्जेस हैं, चाहे वो इसके लिए बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल हो रही हैं, गास के लिए, या जो ऑल ऑफ देम दे आर मोस्टली फाउंड, ठीक है, ये स्पेशली वहाँ से
जो मेडिटेरेनियन सी है वहाँ से ये मिलती हैं, वहाँ पर इनकी आवाज क्या है। क्लियर? एंड वाटर एब्जॉर्बर। सो जैसा कि मैंने बताया, ना सिर्फ साउंड वेव्स को एब्जॉर्ब करती हैं बल्कि दे आर ऑल्सो यूज्ड द स्पॉन्जेस have great capacity to absorb water and hence are used at various places. मुख्तलिफ जगहों पर इस्तेमाल होती हैं चूँकि वाटर को एब्जॉर्ब कर सकती हैं। सो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर आपको क्लैरिफाई हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में और डिस्कस करेंगे द नेक्स्ट फाइलम। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।